Hello guys, it's been a while that I've vlogged. Anyway, currently there's something exciting happening. सबसे पहले तो मैं मास्क उतार दूं जब तक मैं ये intro कर रही हूँ. The thing is that I had told myself that दिवाली धनतेरस के time पे I'll buy myself a new phone from my own savings. But condition being अगर मैं 3 back to back videos release कर लूँ हमारे main channel पे तो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ because main channel की videos की editing is genuinely very hard because they're travel videos, they're long videos, shot on multiple cameras. They take up a lot of time of editing, but I really want to get more regular on the main channel because that is something that I've built from scratch. So yeah, now that we are at the stage that I can publish more often and वो condition पूरी हो गई है. So the good news is that today I'm actually heading out of the house. I just published the latest video which is from Udaipur and I'm not even promoting the video on Instagram right now. मैं कुछ नहीं कर रही, मैं सीधा घर के बाहर निकल रही हूँ. Going to an Apple store and buying myself an iPhone 13 Pro Max. Let's go. So I'm here at One Horizon Center. It's very close to my house. Literally ऐसे 5 मिनट का रास्ता है यहाँ तक आने का. One Horizon Center में एक Apple का store है and the lift is open and I'm just heading to the first floor. Also आज मुझे सहानुभूति देने के लिए सपोर्ट एंड कंपनी देने के लिए उल्टे से खुल गई है लिफ्ट. हाँ, so मैं क्या कह रही थी कि आज मुझे सपोर्ट एंड कंपनी देने के लिए आया है मेरे साथ ईशान जोशी. Welcome to our vlog, ईशान जोशी. अरे एप्पल स्टोर बंद है. Don't tell me. ये एप्पल स्टोर बंद है. ओह मैं बिल्कुल डर गई थी कि एप्पल स्टोर क्लोज्ड है. सर्विस सेंटर क्लोज. सर्विस सेंटर क्लोज था. ये है एप्पल स्टोर. हम लोग गलत साइड से अंदर एंट्री लेने की कोशिश कर रहे थे. एंड लुक एट दिस iPhone 13. ये है iPhone 13 Pro Max एंड ये है iPhone 13 Pro. मेरे को इसकी बॉडी बहुत अच्छी लगती है, लाइक द मेटालिक एजेस. वेरी नाइस एंड गुड डिजाइन. आई एक्चुअली लाइक इट मोर देन द iPhone 11 व्हिच आई एम करंटली यूजिंग. मैंने अभी MacBook Pro खरीदा था and this upgrade came just recently. I felt so bad when this update came. मैंने अभी just 3 महीने पहले M1 chip खरीदा था. Why you do this Apple? Why you do this? तो अभी मैं एप्पल स्टोर पे ही हूँ एंड जस्ट एट द बिलिंग काउंटर फॉर फॉर्मेलिटीज एंड फीलिंग रियली नाइस that I'm getting myself an iPhone 13 Pro Max. Why am I buying the biggest phone? Yeah, size wise, you have very small hands if you don't know. That is because it has the cinematic mode, which is the best. दूसरों में नहीं है. यार दूसरों में नहीं है ना cinematic mode. 13 में नहीं है ना, Pro में नहीं है, सिर्फ Pro Max में है. Content Pro में है ना, Pro में है, Pro Max में है. So should I go for the Pro? हाँ मतलब डिफरेंस पूछ ले. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीचर्स? साइज का ही फर्क है तो प्रो क्यों नहीं लेना? कितना प्राइस में कितना डिफरेंस है? 10,000 में यू गेट अ बिगर स्क्रीन बट यू नीड अ बिगर स्क्रीन. मैं गेमिंग वगैरह तो नहीं करती हूँ. अगर सिनेमैटिक मोड इज द देन 10,000 में इमेजिन यू गेट यूनिकेयर. समझ ले तेरा हो गया बिकॉज यू एडिशनली पेइंग फॉर द वारंटी. हाँ मतलब आई कुड थिंक अबाउट इट. ओके लेट मी थिंक अबाउट इट. ये एंड मोमेंट पे जो मुझे कंफ्यूज कर दिया गया है ना, प्रो लूँ या प्रो मैक्स लूँ. इतनी खुशी. Alright guys, so let's go ahead and unbox our iPhone 13 Pro Max. Yay! Here goes. This is the device. I'm going to start by unboxing it. It's very pretty blue and also the casing is so gorgeous. I can't get over it. It's so pretty. Further खोल के देखते हैं थोड़ा सा. So after you pull this out, there is just one cord. We have this one pin over here and we also have some Apple stickers, and over here in this box there's just one cable. Hence I guess it makes sense to have an adapter because in case you're buying an iPhone for the first time you definitely need an adapter, and this is also a 20-watt adapter for fast charging. Felt a little unnecessary buying this at 1900 rupees, but I guess you need it, so that is why it was recommended to me. And this is the so pretty. I love the color. Okay, इसके ऊपर बस एक अभी स्टिकर लगा हुआ है ये. Should I remove it guys? Should I remove it? I don't feel like removing it. I just don't feel like using this phone at all. What to do? Okay, I think before anything let me also unbox the cover of this phone and then just put this cover on so that it feels nice and safe.
Okay, that's a nice navy blue color, and navy blue color over Sierra blue is going to look just amazing. So let's go for it. अच्छा लग रहा है I think. Okay, I can't honestly believe that this is my phone. And now I'm also going to apply the tempered glass on it. Okay, सबसे पहले तो इस पे already dust आने लग गई है unfortunately because I'm sitting outdoors. Let me see if I can clean the screen first. First of all, I'm going to use the cleaning wipe. इसके ऊपर अभी तक कोई fingerprint कुछ नहीं है, so I'm just going to use a dust removal strip sticker. Okay, now that the dust is fully removed, what I'm going to do is I'm just going to apply the tempered glass. इसके लिए थोड़ा सा process है. First of all, this tempered glass has to be peeled from the back, and this is an easy fit tempered glass. I'm going to remove the back cover first. ये पूरा screen guard tempered glass का back cover remove हो चुका है. I have to slide this in position and then just keep it here. I think tempered glass fix हो चुका है. I'm not sure actually. हाँ, I think पूरी तरह से fix हो चुका है. Last air bubble to go. And now I have to remove from here. Wait for 30 seconds. Okay, done. निकल गया ये तो. I think my tempered glass is fully fitted and इसके ऊपर से बस मुझे एक टॉप का कवर निकालना है and then I'm good to go. Let's do this. Hola. English. India. हाँ, so guys, I'm actually finally vlogging on the iPhone 13 Pro Max only क्योंकि मैंने सोचा मैं इसी फोन पे फ्यूचर में जाके व्लॉग करने वाली हूँ. तो आज की वीडियो में भी मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें व्लॉग कैसा दिख रहा है. ऑडियो क्वालिटी इज ऑल्सो प्रिटी गुड. I've already tested it out and this is just a test for you also कि ऑडियो कैसा साउंड कर रहा है. एंड टू बी ऑनेस्ट माई मेन पर्पज ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस फोन वॉज कि मैं चाहती थी कि मैं अपने कॉन्टेंट में इन्वेस्ट करूँ, जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स. बट मेजॉरिटी ऑफ क्रिएटर्स आर क्रिएटेड ऑन देयर फोन ओनली एंड स्पेशली व्हेन यू आर ऑन द गो इट्स सो ईजी व्हेन यू डू इट ऑन द फोन. एंड इसमें स्पेशली क्योंकि सिनेमैटिक मोड है, आई वॉज रियली interested in trying that out. So I recently went to Srinagar to Kashmir and वहाँ पे मैंने हर मोड से कुछ ना कुछ शूट किया है, whether it's photos, whether it's time lapse, cinematic mode. So now in the next B-roll that rolls in with the music, you'll be able to see everything that I shot in Srinagar on the different modes of this phone. And let's see how did it perform. honest, after viewing back everything, I feel like this is a game changer because मैंने नहीं expect किया था कि इसका cinematic mode इतना ज़्यादा अच्छा होगा. It literally took my videos to the next level, so I'm very happy overall that I bought this phone. Let me know in the comment section what you think about it, what you thought about the performance of the phone, or whether or not you've been hearing good things or also heard of some issues reported by other people. Let me know in the comment section. We can discuss further on whether or not this is a great phone or a great investment. And with this, I'll see you next time in another video. Bye bye guys.